Hello, guys. So, today we have Himank with us, and today in this video, we're gonna talk about the DevOps. He has a very good experience in the DevOps, and he's from a tier 3 college and from the electrical background, but he chooses to be in the DevOps. So, yeah. Hi, Himank. How are you? Yeah, hi Simran. I'm good. How are you? I am also great. Like, I was very excited to have this video because everyone is talking about the front end, back end, Java, competitive programming. So I wanted that this should come to the audience and we should talk about the DevOps more because it's very important field. Yeah. So should we start, Himank? Yeah. I mean, the same feeling goes for me as well because I'm too excited about creating such a video because I have seen like everyone is going behind this DSA or a competitive programming too. I mean, they think like nothing. I mean, if they do not understand this, then nothing will be. I mean, they cannot do great in their life. So yeah, even too excited for this. Actually, the point is that they have decided that to reach to the fan companies and to reach to the some good product based companies, the only way is to get through the DSA. But yeah, that's not true. You can choose another domain also and you can get into the some good companies, right? Like you are currently working in Reddit. So yeah. So Yeah, him yeah. Go ahead. Yeah. So my first question, Himank, like you were from the electrical background, right? So when you have decided like you have to choose this DevOps as your career and you have to go ahead in the DevOps journey, because I think people are very confused nowadays, like and they just start thinking like हम लोग ये भी कर लेते हैं, हम लोग वो भी कर लेते हैं, हम लोग फ्रंट एंड भी कर लेते हैं, हम लोग बैक एंड भी कर लेते हैं, हम लोग डीएसए भी कर लेते हैं. और स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज ना, तो आपको उतना गाइडेंस नहीं रहता है, आपको उतना एक्सपोजर नहीं रहता है. Only difference between the in tier 3 and tier 2 and tier 1 college that I feel is the exposure that you get there, because you see, like you see in your surroundings that there are so many people that is working on this and that, so you also started working, right? But I know that you won't be able to get that much exposure in the college, but you have decided yourself that you have to choose DevOps as your profession. So yeah, at what point of time and how you decided that you have to choose this as your career? हाँ, so I would say कि मतलब I mean the same thing that you said, right? कि हमको पता, I mean everyone starts learning front end, back end, and then the Java or maybe something, right? तो I would say this thing is a good thing first. मतलब ये बेकार नहीं है क्योंकि because you are at that point of time you are in a college, ठीक है? तो if you are in your first year or your second year or even in your third year, you have nothing to lose at that point, right? अगर आप कुछ भी You're वहाँ पे पढ़ते हैं, exploring, yeah. yeah, you have nothing to lose at that point of time and you should explore क्योंकि when Correct. you come to your college there are multiple options that you can explore, लेकिन बिना एक्सप्लोर करे हमको पता नहीं लग सकता कि वो कौन सा हमारे लिए सही है, राइट? या तो Correct. हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उसके बारे में तभी हमको पता हो सकता है, विच आई डू नॉट थिंक कि एक आई मीन नॉर्मल नॉर्मल पर्सन डज दैट, राइट? आई मीन जो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, राइट? तो हाउ दे गोज इनटू द कॉलेज, तो उनको Correct. नहीं पता होता है एंड दे कम टू द कॉलेज एंड आई वुड से दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग एंड व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर. तो उसी तरह से आई मीन व्हेन आई गॉट इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को ये करना है क्योंकि फर्स्ट ईयर में इट्स नथिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल, इट्स अबाउट एन इंजीनियरिंग, राइट? व्हेन यू Basic. स्टार्ट टू लर्न, या बेसिक, सब कुछ बेसिक होता है चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो. तो मैंने भी वही फर्स्ट ईयर तो मेरा भी ऐसे ही गया. Then the second year onwards, when the electrical engineering came to my picture, right? कि electrical engineering कैसे दिखती है, that's how I started to feel कि भाई this is something I cannot do. लेकिन हाँ, मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था मेरे को थोड़ा तो इतना आइडिया था कि आई वुड एंड अप डूइंग इनटू अ आईटी फील्ड क्योंकि कंप्यूटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी अ लॉट, है ना? तो लेकिन हाँ, जैसा बोलते हैं कि आई मीन एक इंटरेस्ट बात अलग होती है व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू दैट फील्ड और जब आपको पता चलता है कि दैट इज नॉट वेरी इजी टू डू, राइट? तो
मैंने भी सेकंड ईयर में देखा, इलेक्ट्रिकल में पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ने का कोशिश किया, बट लेकिन वो नहीं समझा. देन आई But you स्टार्टेड. were very clear that you don't want to do anything in electrical core part, right? Correct. You Yeah, wanted to that go was. in IT industry. Yeah. Yeah. That was very. I mean, from the first point of day in my college, I was very clear Mhm. कि मेरे को कोर में तो कुछ नहीं करना है ना. It somehow landed Yeah. up to me. I do not know. God knows how it got landed up to me, but but I do not wanted to do that. And मेरे को क्लियर था कि मेरे को इसमें तो कोर में तो नहीं जाना है. That was very much pretty much clear to me. From the second year Mm. onwards, I started to learn कि हमने वही जो सब लोग करते हैं, started learning going through the internet, right? And when you go to the Correct. internet, about 90% of the content you will see on the internet is, if you want to go into some good company, I will not say into a FANG also, I will say कि कोई भी एक अच्छी कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी कंपनी हो, मे बी आई से Adobe or Red Hat or any companies, then there is a must. What is that must? You should know DSA. There is always a must put in front of us. In front of us की competitive programming या फिर DSA, that is a must, right? तो मैंने भी वही Correct. पढ़ना चालू किया, बट धीमे धीमे मैंने करना चालू किया, बट दैट डिड नॉट इंटरेस्ट मी आउट. मैं कर लेता था, बट इट वाज नॉट कि हाँ कि मेरे को मजा ही आ रहा है करने में, राइट? वैसा नहीं था. तो मैंने कहा देन व्हाट शुड आई डू, क्योंकि आई मीन इन माय माइंड इट वाज लाइक कि मैं तो बना ही इसलिए हूँ, राइट? एंड इफ दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग मी, देन व्हाट शुड आई डू? इवन इलेक्ट्रिकल इज नॉट इंटरेस्टिंग मी, द कंप्यूटर्स आर नॉट इंटरेस्टिंग मी, देन व्हाट शुड आई डू? तो मैंने और ऑप्शंस सर्च आउट करना चालू किया. दैट्स हाउ आई landed up into the DevOps. Correct. तो आई मीन मैं जब ये किया तो DevOps का पता मेरे को कैसे चला कि मैंने सबसे पहले पढ़ना चालू किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्वर, मतलब कुछ सर्वर करके कोई चीज होती है. एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज कि, मतलब नॉट टू माय माइंड, दैट केम टू इनटू माय पिक्चर वाज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिनक्स. अब पता तो नहीं Mm. है लिनक्स क्या होता है, बट आई मीन उस समय पता चला कि लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे विंडोज है, और जैसे अपना मैक आता है, राइट? फ्रॉम एप्पल देयर इज अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट देयर इज अ विंडोज, फ्रॉम कुछ कुछ कंपनीज है जो लिनक्स करके ऑफर करती हैं. तो दैट्स हाउ आई केम टू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिनक्स. पर धीमे Correct. धीमे एक्सप्लोर Correct. किया तो जब पता चला कि लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स इज अ कर्नल. तो फिर मैंने कहा Actually, देन so many people get confused that Linux is an operating system. Correct, correct. अभी बहुत सारे लोग, I Yeah. mean, when people will start looking into this video, right? When I said the Linux is an operating system, the person, those Mm. who have some knowledge will say, "Hey, man, what he's saying, right?" So Correct. because Linux is an operating system, everyone thinks, but Linux is an kernel. That's not. तो फिर operating system क्या है? That obviously comes to in our mind. कि अगर Linux is kernel है तो what is an operating system? तो वेरी बेसिक एग्जांपल फॉर दैट, जो भी आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर थोड़ा बहुत कॉलेज में भी देखा होगा, तो उबंटू दे, आई मीन एवरीवन हैज हर्ड अबाउट उबंटू, राइट? तो उबंटू इज एन Mm. ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हैज लिनक्स कर्नल इनटू इट. तो उबंटू एक is in something which is an operating system coming from Canonical. Canonical is the company who makes that. So similarly, there is another company called Red Hat, which makes another operating system from a Linux kernel, and there are many more. In अभी हैकिंग का फील्ड में भी काफी लोग लिनक्स को यूज करते हैं, तो उनके लिए काली लिनक्स आता है, पैरेट आता है. सो Correct. that's how it goes. Yeah. So main thing that if you want to enter in good companies, you can explore many things. It's not that you necessarily has to do competitive programming only, because sometimes people, like, even they don't getting interesting in doing DSA and all that competitive programming, they are doing it just because to get land into some good companies. So I think they should explore some good options. So Himang, my Right. right second, राइट, you want मतलब to say? एक्सप्लोर करना चाहिए था. एक्सप्लोर करो आप, क्योंकि अभी काफी ऑप्शंस है. वन इज डेवऑप्स एंड वन इज, Hmm. आई मीन यू हैड अ वीडियो विद Navandeep, right? Salesforce, that is also one Hmm. of the good option where you can explore things, right? So that's how. Yeah. Yeah, it's also boom up where like so many things are already available in Salesforce platform and you just need to do some of add the things. So yeah. Yeah. Uh Second question, Hemang, like it's like how what was your journey to reach at the Red Hat? Like what are the stages and what are the things that you have done in your college period or in and after that so you reach at the Red Hat?
ओके, तो रेड हैट के लिए, आई मीन, रेड हैट का जर्नी आई विल से वाज अ वेरी बिग जर्नी व्हेन आई लैंडेड इनटू रेड हैट। और आई मीन दैट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन माय लाइफ। मतलब जो बोलते हैं ना, बिल्कुल एकदम से चुटकी बजाते हो गया वो। ऐसा कभी सोचा नहीं था। Correct. एंड इट वेरी हैपेंड वेरी क्विकली इन माय लाइफ कि मेरे को रेड हैट से इंटर्नशिप मिल गया, एंड देन आई एंडेड इनटू रेड हैट। तो Hmm. आज से कि मैंने क्या किया था कि मैंने जैसा आप पहले भी बोला कि मैं सेकंड ईयर से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चालू किया। बट इन द थर्ड ईयर ऑफ स्टार्टिंग आई केम टू नो देयर इज सम इंस्टीट्यूट, अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन जयपुर, बिकॉज आई बिलोंग टू जयपुर। तो मैं यहाँ पे ही Hmm. ऑप्शन सर्च करना चालू किया था, तो यहाँ पे काफी अच्छा इंस्टीट्यूट था। एंड देन आई केम टू नो कि ये इंस्टीट्यूट भी, आई मीन, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ पे समर और विंटर के अलावा कहीं पे बैच ही नहीं होते हैं। So then I have to Hmm. bring out some more time, to bring out some more time, and then I started going into their one of the winter batches. तो मैं उनके winter batch में गया, and that's when the first time I came to know something about DevOps. वो पहला टाइम था जब मैंने DevOps नाम की कोई चीज सुनी थी। उससे पहले मैं सिर्फ Linux के बारे में जानता था थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पे जाके Hmm. पता चला कि देयर इज समथिंग नोन एज डेवऑप्स, एंड थोड़ा उसका मीनिंग पता चलने लगा कि भाई डेवऑप्स इज नथिंग अबाउट नथिंग, कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक पकड़ के लेके आएंगे अपन और वो डेवऑप्स बोल देंगे उसको। डेवऑप्स इज जनरली अ प्रैक्टिस और अ मेथोडोलॉजी दैट company uses in order to make sure that whatever the functionality they want to provide to the users, that goes hand in hand और किसी को कोई भी issue ना आए। So दैट इज व्हाट अ डेवऑप्स इज। तो एक तरह से मान लेते हैं कि जो डेवलपर काम कर रहा है और जो ऑपरेशंस के थ्रू उसको डेवलप डिप्लॉय कर रहे हैं, उन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो दैट प्रैक्टिस इज नोन एज डेवऑप्स। तो ये सब चीजें मेरे को वहां पे जाके पता चली। एंड एज यू नो कि ये पैच क्या है कि आई थिंक अराउंड 25 डेज का बैच था विंटर। लेकिन Hmm. कोई भी टेक्नोलॉजी या आई विल से कि आप सी को भी पढ़ना चाहोगे ना, तो 25 डेज में तो आप सी भी नहीं पढ़ सकते, राइट? नहीं पढ़ पाओगे, करेक्ट। अगर आप डीप पढ़ रहे हो उसके बारे में तो 25 days इज नॉट इनफ। या करेक्ट, कि आप 20 डेज और 25 डेज में तो यही पढ़ पाओगे कि व्हाट इज लूप और फॉर लूप कैसे लिखते हैं, या फिर वाइल लूप कैसे लिखते हैं, ऊप्स क्या होता है। सिर्फ इतना ही पढ़ पाओगे आप उसके इवन बारे में। DevOps तो बहुत वास्ट है, बिकॉज लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय प्रोजेक्ट, नो, so I was just creating a, like, Jenkins is just a part of DevOps, right? Ansible Jenkins is just a small part of DevOps. So I was just creating a pipeline for my project, and then too I have taken like 5-10 days to analyze like how to write a Jenkins pipeline and how to use Ansible, how to write YAML file. So obviously it's not like you will be able to learn in 25 days. Yeah. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि 25 डेज में तो हम नहीं समझ सकते हैं कि 25 दिन में समझना, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल टास्क। Hmm. तो बट from that point I understood that this is something very interesting to me, and I mean, whatever the person in front of me वो जो भी बोल रहे हैं, right, I'm able to understand it, and I'm able to process in my mind कि ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, and why it is required, है ना, कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी लोगों को कि ये this is something required, right? तो ये मेरे को सब कुछ अच्छा लगने लगा। सो सिमिलरली इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब तो मैंने विंटर में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा, एंड आई केम टू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेवऑप्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस। तो लेकिन मैंने उनका सेम रिपीटेड बैक, क्योंकि मेरे को काफी अच्छा लगा, मैंने समर में वापस से ज्वाइन किया। तो मैंने समर Hmm. में काफी ज्वाइन किया उसमें मैंने। बट दैट पैच वाज अराउंड 45 to 50 डेज। ओके, तो Okay. कंपैरेटिवली विंटर से ज्यादा था वो। बट दैट इज ऑल्सो, 50 डेज इज ऑल्सो नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड कोई भी टेक्नोलॉजी, राइट? तो लेकिन फिर भी दैट गिव मी मच मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स इट, और मेरे को काफी चीजें समझ आने लगी। और मैं खुद से प्रैक्टिस करता था, बिकॉज आई मीन, कोई भी अगर आपका मेंटर होगा तो ही कैन पुट यू एट सम स्टेट फ्रॉम वेयर यू हैव टू गो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको हाथ पकड़ के ही लेके चले जाएंगे, राइट? दे कैन Correct, ऑब्वियसली correct. प्रोवाइड यू गाइडेंस, राइट? उसके बाद Hmm. आपको ही उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग। तो मैं करता था, मतलब वट एवर टास्क ही यूज टू प्रोवाइड मी एंड वट एवर द थिंग्स ही यूज टू गिव मी, तो मैं उनके हिसाब से करता था। बट आई ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि जो वो बोले, चाहे उसके लिए 20 घंटे लग जाए, और या 15 घंटे लग जाए या 10 घंटे लग जाए, आई नेवर गिव अप ऑन एनी टास्क विच वॉज प्रोवाइडेड टू मी, चाहे उसके लिए कितना ही टाइम लग जाए। बिकॉज दैट टाइम वाज कॉलेज टाइम, राइट? यू हैड नथिंग, आई हैड वेरी क्लियर पिक्चर इन माई माइंड की नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट, इवन आई एम गेनिंग। तो जो भी Hmm. समझ रहा है कि Correct. मेरे को गेन ही हो रहा है, एंड
if something I mean कुछ चीज explore करके मैं खुद से करूंगा ना, तो ये मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा. And when I'm stuck at some point of my time in my life, this will recall me, or I can recall it, and very easy हो जाएगा. So that's how I used to explore, and उधर से मेरा journey आगे बढ़ा. That's how I Devops. landed up. तो पहले आपने जो दो अपना कोर्सेज किया उसके बाद में यू जस्ट ओके सो इन फोर्थ ईयर व्हाट यू हैव स्टार्टेड लाइक डूइंग इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प यू गेट इनटू द योर journey ahead in the Red Hat, or like how do you get reach to that Red Hat placement and all that? Yeah. So, I mean, it's very sad for us, but it is very, मतलब मेरे लिए काफी अच्छा हुआ कि हम 2020 के बैच के हैं, and we were in the Corona time at that point, right? तो I mean, Hmm. that was very sad phase for everyone. लेकिन उसी टाइम पे मेरे को काफी अच्छा मिला अपॉर्चुनिटी कि मैं फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में से फ्रीलांसिंग तो करना चालू कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को काफी अच्छा ग्रास्प होने लग गया था इस पे. तो मैं फ्रीलांसिंग करता था, छोटे थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स मैंने स्टार्ट करे थे. लेकिन when our exams used to happen in March, at that same point Corona came in, right? Hmm. So when Correct. Corona came in, our exams got delayed indefinitely. Even we do not knew when they will happen and what will happen to us, right? Even Hmm. we'll give the exams or not. At some point there was a decision also made that no exams for 2020 batch, right? So Correct. yeah, so instead of wasting the time, I applied into some. I mean, I applied randomly in some all the companies on Internshala, and I Hmm. got an offer. I mean, I somehow got an offer. There was a US based startup, right? And I got an offer from there. So uh, the person was very. I mean, उनको बहुत अच्छा लगा मेरे से बात करके, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस थे, they did not expect me to answer, but I gave them, and I got the offer. I believe I got the offer the next day itself. कि मेरे को नेक्स्ट डे ही ऑफर मिल गया था कि you are selected and you can start. You and they told me that you can start working the next Monday itself. So that's how very quickly I got into an internship, and I started learning how the real world projects works, right? क्योंकि एक जो concepts आप build up करते हैं वो that is very good, लेकिन real world में आप उसको किस तरह से implement करेंगे, उसका क्या use case है, and how the business, मतलब कोई भी एक बिजनेस जो एंड यूजर का लाइफ को अच्छा करता है, वो उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं, एंड हाउ दिस इज हेल्पफुल फॉर द पीपल, राइट? तो वहां से मैंने Correct. किया. वहां पे I say that internship was very lucky for me, क्योंकि क्योंकि जब स्टार्टअप्स में काम करते हैं ना, यू समटाइम्स डू नॉट इवन गेट टू वर्क विद एंटरप्राइजेस, बट मैं बहुत लकी था कि मेरे Hmm. को पहला ही प्रोजेक्ट मेरे को एंटरप्राइज के साथ काम करने को मिला. And they somehow presented me that I'm shadowing that person, right? And I mean, I started working on that, and I told him at some point after 2.5 months that you give this whole project to me, I can handle that. Nothing to worry about. So even that's what I'm saying. I was very lucky, and that person backed me up in all this career, in all this of my phase. I mean, in all my career phase, right? उन्होंने मेरे को Hmm. back किया, और उन्होंने मेरे को पूरा प्रेडिक्ट किया. There was a situation I remember कि जब मैंने एक I mean, if I do not know how many people will understand that, एक सर्वर ही उड़ा दिया था. That was a production server, and I somehow messed up with it, right? Oh, लेकिन it's like protection is very, you need to be very yeah, careful in I protection. messed up with it, but this person, that was the first instance when I messed up with that production. But this person told me that there could be many instances coming in your life that where you will, I mean, where you will be unknowingly doing it. Okay, आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाएगा. लेकिन the the key point here is how calmly you understand the situation, और आप उसको किस तरह से जल्दी से बैकअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गलती हो चुकी है अब, right? There is no point you cry on that, and there is moreover what you should do is you should start working on how to recover this. तो उन्होंने मेरे को ये बोला, and this he said me, how confident you are that you can recover this. I told them give me 30 minutes, I knew it, I can recover it, and that was up and running. That boost up, that gave my confidence a boost up, that I can go into any situations and recover whatever is happening in my life. Hmm. तो वहां पे ऐसा हुआ. And then suddenly around October or November, the news came in that we have an exams from this or this date, and I have to, I mean, unfortunately or fortunately, I will say,
I had to stop that internship because the fourth year का Hmm. एग्जाम था and Exam. we cannot play with that Obviously, क्योंकि we need a degree, no? Yeah. या क्योंकि उसके साथ हम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आगे जाने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. So Correct, that's correct. how I, unfortunately, or maybe say I'll say fortunately, even I was not happy to leave that internship at that point. लेकिन वो मेरे को छोड़ना पड़ा और फिर मैंने अपने एग्जाम्स का प्रिपेयर किया and that's how my college went off. Okay. Hmm, हाँ फिर जैसा कि आपने पूछा कि how did I come to लद्दाख, right? अब that's what I'm saying कि मैंने जैसा पहले बोला कि ये बहुत इस तरह से चल रहा था लाइफ का फेस कि आई नेवर थॉट ऑफ दैट हाउ आई विल गेट इनटू लद्दाख, लेकिन बहुत जल्दी हुआ कि एग्जाम्स खत्म हुआ, एक रैंडम जॉब पोस्टिंग देखी लद्दाख पे, मैंने अप्लाई किया और वहां से कॉल भी आ गया. व्हाट आई शुड से, मेरा रिज्यूमे भी ठीक से नहीं बनाया हुआ था मैंने. But like from your talking ना, I just wanted to tell the audience that हम लोग किसी भी कंपनी में जाने से पहले, तो हम लोग अगर फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप करते हैं ना, तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज देते हैं कहीं पे भी जाने से पहले. बिकॉज आई पर्सनली नो दैट आई डिडंट डिड एनी इंटर्नशिप बिफोर गोइंग टू द कंपनी, राइट? सो व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ना, सो आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑन पाइथन व्हेन आई वाज वर्किंग. I was not knowing anything about Python, but I used to ask like so silly questions to my lead. But if you have done the freelancing projects and internshala, then you get to learn a lot. So everyone should be like, should be doing some freelancing and internship projects in their time, so that after that they will become like 1 or 2 years of experience you get in your freelancing and internshala only, because there you need to work from the scratch. So yeah, या I think तो दैट प्लेज अ, हाँ जैसा ये बोला कि दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि important. फोर्थ ईयर में देयर इज नो वे यू गेट इनटू अ कंपनी एंड वर्क, राइट? तो Hmm. बेटर यू ऑप्ट फॉर something that like these options, right? Yeah. And I think you have utilized your COVID time very right. Like when everyone is tensed and about their joining, like when the joining will come, you were working and happy. Like, yeah. That time was very good for me. Everyone was tensed and everything was going wrong for everyone. And Hmm. that was the one thing which came right to me at that point. Yeah. At one point, a frustration level was coming, like when the joining will come. But the good point that happened, like I also started my learning, I started my coding journey. So I think that was a good time also that has given a lot of learning. सो या थैंक्स हिमांक. आपका बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगता है बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था ये, और काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, तो जिनको डे से नहीं अच्छा लगता है वो ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग मोर? या तो मैं यही बोलूंगा, बट द लास्ट बिफोर रैपिंग अप दिस ऑल द थिंग्स, मैं यही बोलूंगा कि you start learning competitive programming DSA because that is very much essential for you. Why? Because कि computer is all about code. अगर आपको वो नहीं करेक्ट. समझ आएगा तो there is no point of going into computers, right? Everything from the video conferencing app to your WhatsApp or to everything is a code. तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा बिकॉज इन डेवऑप्स ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं पे जाके थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. एंड लॉजिक लगाना. and DSA in competitive is more about putting that logic into the real world कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको आप रियल वर्ल्ड में कैसे लगाते हैं, राइट? तो यू लर्न इट, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो आपकी दुनिया खत्म हो गई है, राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप किसी जगह पे जाने का सोचते हैं और आपको उसकी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जस्ट अप्लाई फॉर दैट क्योंकि क्या करेक्ट. पता कब कॉल आ जाएगा एंड यू विल बी गोइंग देयर. द सेम गोज फॉर मी. अगर मैं कभी अप्लाई नहीं करता देन नथिंग वुड हैव हैपेंड टू मी. अगर मैं ये सोच के रह जाता ना कि मेरा रिज्यूमे खराब है या मेरे को अभी रेड हैट नहीं बुलाएगा या मेरे को एक्स कंपनी नहीं बुलाएगी या वाई कंपनी नहीं बुलाएगी तो मैं नहीं कर सकता, राइट? तो जस्ट अप्लाई वॉट एवर द केस. ज्यादा से ज्यादा मना ही तो होगा. दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग टू यू, राइट? If yes That comes, is, yeah, it's in your that is mind. yeah, okay, yeah, that's what I will say. Yeah. Correct, correct. So I also think this, like when you started thinking na, like my resume is not up to the mark, my
skills are not up to the marks, that's why I will not apply, and will delay, like you are delaying that I will learn this and then after that out I will apply. So this is all a wastage of time. I think you should start applying. And I think अगर आप अपने कॉलेज पीरियड में हो तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, एंड देन यू शुड डिसाइड लाइक इन विच फील्ड यू वांट टू गो. सो या या हम, मेरे को लगता है हम लोगों को एक डेवॉप्स के बारे में, कि हम लोग डेवॉप्स के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो उसका एक दूसरा सेशन भी रख सकते हैं. उसका, उसके लिए एक अलग वीडियो रख सकते हैं कि डेवॉप्स के लिए हम लोगों को क्या क्या मटेरियल्स पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जर्नी. या हाँ, we can talk about this what is DevOps में, मतलब क्योंकि इस वीडियो में तो मेरे पास I mean we didn't had much time to talk about DevOps, but लेकिन या क्योंकि DevOps काफी बड़ा field है, if I talk about this then I can even talk whole day about what is DevOps, how it goes, right? So करेक्ट. I'll not mess up what I wanted दिस. to say in a single 30 or to 40 minute session, but yeah. लेकिन हाँ, अगर आपको DevOps पढ़ना है, right, तो if you are I mean if you want to start your journey, one platform is Code Cloud. Code Cloud पे बहुत अच्छे videos हैं DevOps के, तो you can start learning from that. Code Cloud is one of the best platform that I have seen, where you can start learning from the DevOps. Very basic से लेके end तक सब बताया है उसमें, right? But that's a paid thing. But that's obviously a paid thing. लेकिन हाँ, अगर आपको ओके. नहीं समझ आता, you can start with YouTube as well, कि क्या होता है ये. तो YouTube पे भी बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपको. Another thing is, मतलब मैं बोलूँगा कि जिस समय मैं यहाँ पे पढ़ता था, वो the institute I used to talk, right? They started fortunately giving online courses as well right now. And I mean, you can go through their courses as well. So, I mean, Simran can link Yeah, those I in the will, the description box, right? description. Yeah, And yeah, then yeah, sure. if you like that, you can go ahead and I mean, it's totally up to you क्योंकि बहुत content है. And but I जिससे मैंने पढ़ा वही मैं लोगों को suggest कर रहा हूँ. That's what I'm Yeah, doing, right? correct, correct. Thanks, Himang. Thanks a lot for Yeah. doing this. Yeah. Uh, Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा. थैंक यू. बाय बाय. Bye, bye, Simran.